Assalamu alaikum guys, welcome back to another video. So today I have with me a very talented young girl. She is called Musfirah, and I came to know about her from the famous social media app known as Instagram. तो बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर हम मुस्फिरा की तरफ चलते हैं and let's get to know her. अस्सलाम वालेकुम मुस्फिरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सो हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब योरसेल्फ? आपको अगर अपने आप का तारुफ करवाना पड़े तो आप किन अल्फाज में करवाना चाहेंगी? मैं अपना बस जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल जिसको हर चीज़ करने का शौक है, जिसको राइटिंग करने का भी शौक है, हु लव्स टू ड्रॉ, पेंट एंड हु लव्स टू हेल्प पीपल। सो दैट्स इट। आई जस्ट लव डूइंग एवरीथिंग दैट आई फील आई शुड। तो बस ये ऐसे ही मैं आपको तारुफ करवाऊंगी। अच्छा, तो मैं इस तरह स्टार्ट करना चाहूंगी कि हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड, मतलब कहाँ से आइडिया आया और स्टार्ट से जर्नी में पूछना चाहूंगी कि किधर से स्टार्ट किया था और जहाँ पे आज मुस्फिरा खड़ी है वो उसको कितना टाइम लगा है बिल्कुल स्टार्ट से उधर तक आने में जिधर आज मुस्फिरा खड़ी है। Well, that's a very interesting question. I would love to answer that. मुझे जितना टाइम लगा है वो है लगे हैं, if I'm 20 today, it took me 5 years to be here because I would say since 14 and 15 I started working on my goals. I started working on what I want. और मुझे मेरे साथ like everybody goes through bad phases of life और कुछ ना कुछ होता रहता है, तो all those events, the traumatic incidents taught me so much कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह when I'm 20 I feel that I have learned and achieved enough जितना मुझे करना था। ठीक है, अब जो है वो एक एक्स्ट्रा गोल्स होते हैं कि करियर के लिए जॉब चाहिए, दैट्स इट, लाइक दैट्स द ओनली गोल आई हैव एंड आई हैव अदर गोल्स एज वेल, बट एक होता है ना स्पेसिफिक, क्योंकि बिकॉज वट एवर आई वॉन्टेड टू अचीव तो वो मैंने किया। अब जो वो मुस्फिरा थी पहले 15 ईयर्स वाली, दैट शी वाज वेरी स्टूपिड, शी वाज वेरी चाइल्डिश और बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, ऑब्वियसली ट्रस्ट कर लेना लोगों पे, बट आई स्टिल ट्रस्ट पीपल, बट एक होता है ना, अब एक डर होता है दिल में। लेकिन अब मैं जो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो जर्नी मेरी है, बट आई नो आई एम वेरी पॉजिटिव नाउ, आई एम वेरी मेच्योर, आई एम काइंड एंड I am happy with myself because of myself, मतलब I am not dependent on anybody for my happiness. मुझे अपने अंदर satisfaction मिलती है, मुझे अपने अंदर peace मिलता है, मुझे अपने अंदर से ही खुशी मिलती है। मैं ही अपने आप की inspiration हूँ, मैं ही अपने आप की, कि अगर if I want to compete with somebody, it's me who will compete, अपने आप से ही। मैं किसी और को नहीं देखूंगी, हाँ किसी और से इंस्पिरेशन ले लूँगी, बट अपने आप को ही मैं सामने एग्जाम्पल रख के कॉम्पिटिशन करूँगी। वाई? बिकॉज दैट इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, कि मैं क्या थी और अब मैं क्या हूँ और मुझे अब क्या बनना है। तो मैं ये कहूँगी कि दैट मुस्फिरा, द जर्नी आई वेंट थ्रू इज़ अ जर्नी फ्रॉम बीइंग अ वेरी नेगेटिव ओवर थिंकर, जो हर चीज़ को ओवर थिंक करती थी, फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ वेरी होपफुल, पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग दैट शी हैज़ इन हर लाइफ। और अब ओवर थिंकिंग नहीं होती इतनी। Wow, अल्हम्दुलिल्लाह। this is so great. Thank I you. definitely need to get some lessons from you. अच्छा, तो आई वांट टू आस्क कि किस तरह से, मतलब जैसे एवरीबडी हैज लाइक सम इंस्पिरेशंस बुक रीडिंग में, इफ आप देखें या पोइट्री की तरफ आए या प्रोज की तरफ आए, फिक्शन की तरफ, विच वर द फ्यू वेरी फर्स्ट राइटर्स, या कौन से ऐसे राइटर्स हैं जिनका एक इम्प्रेशन पड़ा मुस्फिरा की लाइफ पे और दे कंट्रीब्यूटेड सम वे इन हर लाइफ एंड चेंज्ड इट समहाउ? Okay. So, well, I'll mention the author's name as well. पहले तो ये था कि I never used to write. पता है, when I was a kid, जब मैं अपने प्राइमरी में थी, my teachers were like, you're so dumb, you cannot do anything, और मेरे लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स भी नहीं आते थे। सोचती थी ओके, आई डू नॉट नो इंग्लिश और मे बी आई कैन नॉट राइट। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, दे राइट फ्रॉम द स्टार्ट, वो एक जर्नी स्टार्ट होती है उनकी। मेरी राइटिंग की जर्नी इस तरह स्टार्ट नहीं हुई। आई वाज 17 when I came across Amna Dhanani's page. She's an author, a lot of people might know her, she's very famous, और वो पहली पाकिस्तानी राइटर थी। मुझे हुआ कि oh my, she was the first पाकिस्तानी writer I ever saw. I was like oh my god, पाकिस्तानी राइटर्स भी होते हैं। I was so excited.
And I read her because मैं उस वक्त इंस्टाग्राम पे लाइक उस वक्त नया नया ज़्यादा इंस्टाग्राम ऊंचा होना शुरू हुआ था 2017-16 की बात है and I was like okay wow and I was so inspired by her writings the way she wrote and I was like oh my god they're so pretty the writings the poetries are so pretty I'll try it too when I started writing मैंने आमना धरानी को मैसेज किया कि I wrote these ना she replied to me she's like you can do better and you can be amazing at it ना inshallah I was so Wow. yeah, I was so happy. If you won't even remember it, I know, but I was so happy. And then I started writing. I started writing, and every day I used to write something down. I used to, because मेरी बचपन से आदत है books पढ़ने की, ठीक है? And उससे पहले भी I used to write on Wattpad. Fan fictions जो थी वो काफी famous होती थी मेरी fan fictions, yeah. Wow. Yeah, my fan fictions were very like I have almost 50,000 likes and views on my fan fictions. तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे था मैं लिखती थी तो फिर पोइट्री की तरफ आने लगी एंड शॉर्ट राइटर्स फिर मैंने जो है अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया a lot of people supported me and then with time मैंने पहले प्रोज लिखा बिकॉज मेरा प्रोज में था फिर मैंने पोइट्रीज पढ़ी मैंने उसके एग्जाम्पल्स देखे फिर मैंने आई स्टार्टेड राइटिंग माई पोइट्रीज और फिर उसके बाद फिर जब मैं पोइट्री पे आई हूँ तो मुझे लगता है मैंने प्रोज को साइड पे कर दिया है और अब मैं पोइट्रीज ही लिखती हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वोंट से कि आई एम अ वेरी ग्रेट पोएट और समथिंग बट आई एम स्टिल लर्निंग मैं हर किसी राइटर मैंने जितने फॉलो किए हुए हैं चाहे वो मुझसे छोटा हो चाहे वो मुझसे बड़ा हो चाहे वो नया हो I learn something from them. And I would say everyone who I'm following or everyone who I'm reading is my inspiration because one way or another कोई ना कोई मेरी कहीं ना कोई एक point trigger कर देता है कि okay I need to write something about it too. I can write something, I can mold those words into this way too. तो फिर ये हो जाता है. तो I think inspiration के लिए तो आमना दरानी है but then all the writers that I have been following till now. This is very great. अच्छा, Thank you. ओरिजिनली बुक, अब हम बुक की तरफ आते हैं बिकॉज इट्स लाइक द मेन सेंटर ऑफ अटेंशन टुडे। तो बुक के बारे में बताना चाहेंगी आपके कहाँ से आइडिया आया, मतलब लाइक ये आइडिया कहाँ से आया कि आर गोइंग टू गेट इट पब्लिश्ड, और फिर हाउ वाज योर फीलिंग व्हेन इट फर्स्ट केम इनटू योर हैंड्स, मतलब लाइक वो तो वाकई एक सरियल सी फीलिंग होती है कि you know something that you have written is in your own hands। तो जबरदस्त सी ऐसी इनएक्सप्लेनेबल फीलिंग होती है कि मतलब यू कैन नॉट इवन एक्सप्लेन इट, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि व्यूअर्स विल लाइक टू नो कि व्हाट वर द स्ट्रगल्स एंड देन व्हाट वाज द आउटकम एंड हाउ हैप्पी वर यू फ्रॉम द आउटकम, क्योंकि पाकिस्तान में इट इज अ ग्रेट स्ट्रगल टू गेट योर बुक पब्लिश्ड। तो Hmm. I really want to know the details about that. Okay, so first like I used to have a notebook जिसके अंदर मैं बहुत सारी पोइट्रीज लिखती थी जो मैं पोस्ट नहीं करती थी। So a friend of mine जिसने अभी अपनी recently लिटरेरी एजेंसी जो यंग राइटर्स को जो है वो करती है पब्लिशिंग में हेल्प करती है उनके लिए आसानी करती है, a friend of mine है। So she मतलब she used वो उस वक्त तक उसने वो स्टार्टअप अभी स्टार्ट किया नहीं था ना एंड she wanted to start it now. So she saw my book and she's like, Musfirah, your books, your poetries are worth publishing now. So she was the push, and I was like, oh really? Can I publish? Am I going to be a good writer? Will people buy my book? So she was like, they will, okay. और मेरी poetry में इत्तेफाक ये था कि from the first poem till the last there was a story. एक story लग रही थी कि no, not only one poem that was a story, but from the start till the end there was some story going on, and it seemed like there was a journey in the poems. एक हर को poem एक से एक connected थी किसी ना किसी way में. So I was like, okay, I'll try writing a journey in the form of poems. I'll try instead of ballads या कुछ भी I'll try writing a journey in the form of poems. ठीक है, फिर मैंने कुछ poems complete की जो एक target था कि इतनी poems मेरी book में होनी चाहिए। उसके बाद she pushed me, she helped, my friend helped me out, she's like you can do it, a lot of not only her, my family, my friends, a lot of people supported me कि yes you should now। मैंने कहा चलो चलते हैं करते हैं publish, कोई बात नहीं क्या होगा। कोई बात नहीं। आई मीन आई वाज स्टिल लाइक इट हैज़ बीन लाइक 2018 में नहीं 2019 में पब्लिश हुई है मेरी बुक। तो मैंने उस वक्त सोच लिया था कि ठीक है चलो ओके कर लेते हैं कुछ नहीं होता, लेट्स गो विद इट। तो जो है बहुत सारी गलतियाँ भी हैं उस बुक्स में, तो मैं जानती हूँ क्या गलतियाँ हैं क्या नहीं है, कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलो करते हैं। उसके बाद मैंने बुक पब्लिश की। उसके बाद आई वाज वेरी एक्साइटेड, जब तक पब्लिशिंग में हुई मुझसे महीने नहीं गुजर रहे थे कि पब्लिशिंग जल्दी प्रिंट होकर आ जाए, अब क्या हो गया है। एंड देन आई गॉट माई द डे आई गॉट माई पार्सल ऑफ दैट होल stock of my books, I was so happy, so happy. It just felt like
Wow, I have a name on a book. I wrote something. Oh my God, I literally need to show this to my language teacher who told me I was dumb. And I was so happy. Wow. Yeah, Yes. exactly. So I was so happy and then everybody was happy around me. I still have a picture of that day जब मैंने वो book के साथ boomerang बनाया था, and that smile, I think that's not going anywhere. And I was so happy. I kept taking pictures. I kept hugging it, and then I literally dispatched some of the orders उसी दिन जो मेरे पास pre orders थे वो मैंने उसी दिन dispatch कर दी. इतनी excitement थी कि सब देखे मेरी book. So yeah, it was really, you know, बहुत एक अलग ही खुशी थी कि oh wow वाली होती है ना कि I have Yeah, something of me that I never exactly. dreamt of. It's वाकई बहुत ज्यादा आपको खुशी होती है. अच्छा, तो now that you have published a book and it is like very great book and बहुत ज्यादा तो उसके अलावा I also happen to know that you are also running a page on Instagram which have the people having issues related to mental health. So उसका कहाँ से I'm not मेरे ना दिमाग से उसका नाम slip हो गया. I'm not sure what that account's name was. Talk to But her. उसके बारे में भी I want to talk about क्योंकि वो भी एक ऐसा टॉपिक है which needs to be addressed here and I think that I should be the one मतलब like I should contribute in telling people कि अच्छा ठीक है this is something serious and there are people who are helping people with having mental issues and mental problems. So उसके बारे में बात करना चाहेंगी चाहेंगी आप मतलब हमें बताएं कि उसका ख्याल कैसे आया था. So it's talk to help. और जो है मैं जब बहुत छोटी थी, बहुत छोटी I was like I remember this from like when I was 5 years old. So my siblings asked me, "Musfirah, बड़े होके क्या बनना है?" And I was like, "I want to help people." I still remember. That's the only memory I remember because I don't remember things that happened 2 minutes before. So yeah, that's the only memory I remember. So my sister was like, "You can." They always wanted me to be a doctor, so they were like, "Okay, you can be a doctor and can help people." I was like, "Yeah, sure." But then when I grew up, I realized I really don't want to be a doctor. I cannot be a doctor, so I shifted to engineering. तो उसके बाद like again 2018 की बात है when मेरे ऊपर एक बहुत ही डिप्रेसिव फेस था और मैं काफ़ी चीज़ों से गुजर रही थी एंड आई रियली वांटेड टू रीच आउट टू समबडी हु कैन हेल्प मी आउट. ठीक है. अब एक उस वक्त भी डर था कि फैमिली समझेगी नहीं समझेगी. एक था फ्रेंड्स समझेंगे. फ्रेंड्स बेशक समझते थे बट आई वाज रियली यू नो कि व्हाट इफ आई एम बर्डनिंग देम एंड व्हाट इफ समथिंग लाइक दैट. I, Exactly. yeah, so I wanted a platform कि मुझे कोई help करे और बोले कि ठीक है we are here for you who can just talk to me without using my personal problems as an attack. ठीक है क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो अगर आप stranger से बात करें हो सकता है they use it as an attack. तो Yeah, मैंने बहुत exactly. सारे yeah I started searching for a lot of counseling pages and all. They were all asking for money and a lot of money and I didn't have any money. So I was like Musfir, once you're out of it, start something for people like you. ठीक है. And then when I was still struggling. ठीक है. मैं बहुत struggle कर रही थी but then I got better with my own help, with my own self. मैंने करा बहुत कोशिशें की. मैंने videos देखी how I can do to come out of it because nobody loves to be in depression, right? फिर उसके बाद मैंने जो है start किया talk to help. एक रात मेरे दिमाग में आया I want to start something now. तो मैंने start किया. I shared it with one of my friends. She's like, yeah, let's do it together. And और मेरे पास बहुत सारे लोग जो है messages पर भी आते थे कि you know I don't know how people used to relate their poetries with me. तो उनको लगता था I'll understand them, so they used to talk to me about their problems. तो मैं काफ़ी ज़्यादा थी और मेरी I think पहले से बहुत आदत है. मैं flexing नहीं कर रही हूँ but I like to listen to people and I like to understand them. तो तो फिर मैंने start किया. We were just two people and the first person who came to us for help was from Spain. Oh खैर we wow. we helped that guy out. फिर हल्के हल्के ना फिर मैं यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में बिजी हो गई. Then I couldn't stand up for like talk to help. थोड़ा सा ऐसे ही पड़ा हुआ था. मैंने किसी को नहीं बताया था it's mine because I was like no I don't want people to know it's mine. I just want them to just talk to help and be there blah blah blah. फिर उसके बाद in November I started a team. मैंने फिर team recruitments की सब कुछ हुआ and then I started helping out. Now we have a team of alhamdulillah 26 volunteers with 5 psychologists. तो अब ये होता है
है कि हमने हल्के हल्के स्टेप अहेड किया। पहले हमारे पास साइकोलॉजिस्ट नहीं थी, फिर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आई, वो सब वॉल्टियर करी थी हमने 2 साल तक, यानी 2018, 2019 और 2020 तक। वी प्रोवाइडेड फ्री ऑनलाइन काउंसलिंग्स, प्रॉपर सेशंस जो होते हैं हमारे। तो उसके बाद अब ऑब्वियसली वी स्टार्टेड चार्जिंग, क्योंकि फिर लोग बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। That's what we हाँ, experience. People take it for granted. So we are not charging 100, oh sorry, thousands or 500 or something. We are charging even less, and it's just per session. Anybody can afford it. I won't tell here because it's not a good way. You can always check it on our website. Talk to exactly. या सो वी आर नॉट चार्जिंग दैट मच, बट या वी आर चार्जिंग। तो जो है फिर वो साइकोलॉजिस्ट वगैरह आए, फिर बहुत सारा कुछ टीम बनी, इश्यूज भी हुए बहुत सारे टीम्स के बीच में। फिर टीम्स को हमने एक कहते हैं ना शफल किया थोड़ा, एक कहते हैं ना टीम को अच्छे लोग जो बहुत ही सिंसियर थे टॉक टू हेल्प के लिए, दे स्टेड, some went away। तो कोई बात नहीं, हमने खैर वी ग्रू, फिर हमने हल्के हल्के वी वर कॉल्ड ऑन समा टीवी, देन आज टीवी, वी वर कॉल्ड ट्वाइस ऑन समा टीवी, फिर आज टीवी पे Oh भी my आए। God. या एंड This देन is great. This is so huge. बहुत जबरदस्त बात है यार, मतलब like I am amazed. थैंक यू। नहीं एक्चुअली जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था उस दिन मैंने ना सोते सोते जब मैं इमेजिन करी थी कि टॉक टू हेल्प चलाऊंगी, इतना आगे बढ़ूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, एक होता है ना जब यू आर स्टार्टिंग समथिंग और यू वांट टू स्टार्ट, यू जस्ट गो हेड कि मैं इतना ड्रीम हाई करूंगी। सो Yeah, दैट exactly. सो विद तो उस रात ना मैं अपनी इंटरव्यू एक होता है ना इंसान अपने आप से बातें करता है, आई एम नॉट अशेम टू डू दैट। तो मैंने अपने आप से इंटरव्यू लिया, मैंने कहा मैं ये बोलूंगी, मैं वो बोलूंगी। एंड द डे व्हेन आई वाज इनवाइटेड एट समा टीवी, आई वाज लाइक ओ वाओ, आई विल से एवरीथिंग दैट आई डिसाइडेड 2 years ago। So everybody was like, Musfirah, how are you so confident? How are you so, you know, so straight to the point? अब मैं उनको क्या बताती कि मैं 2 साल से प्रिपेयर कर रही थी कि मैं कभी इंटरव्यू पे जाऊंगी, किसी को समझाऊंगी तो मैं इस तरह करूंगी। खैर सो समा टीवी पे एक बार आया, फिर वी वर कॉल्ड ऑन आज टीवी, देन वी अगेन वर कॉल्ड ऑन समा टीवी फॉर अ कैंपेन जो था, जो बीच में किसी बच्चे ने फेलियर की वजह से सुसाइड की थी। तो उस पर वी वर कॉल्ड, हमने जो है एक वीडियो बनाई थी जो थी इट्स ओके टू फेल कैंपेन था। ये किसी का इंस्पायर्ड था, SDGs स्क्वाड था, उससे इंस्पायर्ड हमने ये वीडियो बनाई थी। एंड ऑल ऑफ आवर टीम मेंबर्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु weren't our team members, they came up with on front with a tag that I am Musfira. Say for example, I came up with I am Musfira and I failed in this, but it's okay. So this is how we all came up in that video. It's available on our YouTube and Instagram as well. तो इस तरह करके हमने किया, and then हल्के हल्के we started getting people जिनको हमारे पास internship करने, psychology background के people, they wanted to be an intern at our place। तो वो थोड़ा सा we were like, oh, okay। हल्के हल्के जो है a lot of people started showing interest, a lot of psychologists wanted to join us। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा अवेयरनेस कैंपेन्स पड़ी, हमने जो है लोगों की, हमने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 250 से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर चुके हैं फ्री में। एंड हमारे पास एक्टिव लिसनर्स हैं जो आपसे फ्री में करते हैं। एक्टिव लिसनर्स डू नॉट चार्ज। हम आप जैसे इसे फॉर एग्जांपल यू वांट टू टॉक, यू वुड कम टू अस, यू वुड जस्ट टेक्स्ट अस, वी असाइन यू अ पर्सन, यू टॉक टू दैट पर्सन, आराम से दिल खोल के बात करो, जो कहना है कहो, वो तुम्हारी सिर्फ सुनेगा, सिर्फ कुछ नहीं करेगा, दिल लिसन टू यू, दिल हेल्प यू आउट, एंड इफ़ यू वांट अ प्रोफेशनल विल सजेस्ट यू। फिर हमारे जो है मोटिवेटिंग कंटेंट हमारा इंस्टाग्राम पे मौजूद है, स्टोरीज़ होती हैं, और हम लोग वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने OCD पे वर्कशॉप कंडक्ट की थी। और इस तरह हम अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। और हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट भी बन चुकी है। वो वेबसाइट भी मैंने और मेरी फ्रेंड ने बनाई थी, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट हैव अ बजट ना, तो वी मेड अ वेबसाइट अब ना। Wow. Now, inshallah, soon enough, we are going to bring up something huge soon as well. अभी हमारा एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, तो जिसको ज्वाइन करना है टॉक टू हेल्प टेम्प्रेरी बेस पे कि पार्ट टाइम टॉक टू हेल्प पे दे, so they can always join us. That project is coming soon, so stay tuned। This is so great. मतलब मैं इस कदर इंस्पायर्ड हो गई हूँ यहाँ पे बैठे हुए। आई कैन नॉट, मतलब आई न्यू बेसिकली अबाउट दैट, बट मुझे इतने अच्छे तरीके से आइडिया नहीं था कि व्हाट इट्स अबाउट एंड मतलब कितना ज्यादा है ना। बिकॉज प्रीवियसली मैं एक इसी तरह की ना छोटा सा इंस्टाग्राम से स्टार्ट हुई थी। आई वोंट मेंशन द नेम, आई वाज एसोसिएटेड विद दैट ना। वो भी इसी तरह मतलब लाइक दे हेल्प पीपल बट नॉट साइकोलॉजिकल इश्यूज पे। दे यूज टू मतलब लाइक जिस तरह आप राशन देने जाते हो और इस तरह की जो चीजें होती हैं ना,
वो थी, बट इट वाज नॉट लाइक सक्सेसफुल दैट मच, मतलब मुझे कुछ उस तरह का ना उसमें फील नहीं आ रही थी कि मतलब दे आर रियली डूइंग समथिंग, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से दे वर डूइंग अ लॉट, बट आई जस्ट थॉट it's not like मतलब इस तरह का हो कि they'll be, but now I have listened to you and now that I know about talk to ठीक है, so I am just going to apply. I really am definitely going to do this after this interview, I swear, क्योंकि I am very inspired and I am like in an awe कि बहुत ज़्यादा, it's really great that at this young age you are, you have just not published one book, but you are running a, a institution, you can say that an institution, an organization, and people who really want to bring change in the society. ये बहुत ज़बरदस्त बात है. I am really really happy to have this chance to talk to you. I really am happy. अच्छा, उसके अलावा I would like to ask के कोई future projects, मतलब like कोई है fiction की तरफ आने का, या prose में कुछ publish करने का, या poetry में publish करने का, anything that you are going to do in the future relating to your writings. I do plan to publish a book, लेकिन वो poetry से related नहीं होगी. It might have a little poetry part, but it's going to be about life, spirituality, and what I learned from my life. And I think as a young generation, हम सब एक ही generation के हैं who are lost at the moment, who has a lot of heartbroken issues, किसी पे lost in the spiritual path, नमाज़ों की तरफ आने वाला, और we सारी सब लोग बहुत बहुत ही कहते हैं ना, we're all lost somewhere. And in order to go, my goal, I don't know if I'll ever be able to do that, but my goal is to spread positivity and to spread, the right path. एक होता है ना कि यार एक इंसान को सीधे रास्ते पे आना है. So I want to write a book on life, spirituality and my own experiences on how I overcame it. लोग सोचते हैं कि overthinking overcome नहीं की जा सकती. It can be to an extent. आप सोचते हो, हर किसी का एक दिमाग का वो होता है, आप सोचते हो, लेकिन I was such a stupid overthinker, I would say, but I did overcome it. ठीक है, मैं इतना ज़्यादा हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मुझे ये सोचती हूँ कि यार मैं कुछ सोच क्यों नहीं रही, कुछ मसला है यार, मैं कुछ सोच क्यों नहीं रही. तो I think everything can be done if you think it's possible. Obviously it's not easy, it cannot be done in a week or a day or a two. It has to take years. It took me 2 years to actually come out of all of this and to be so positive and to be so hopeful, alhamdulillah. तो बस मैं ये कहूँगी कि तो मेरी बुक जो है ना, इंशाल्लाह वो मैंने अभी प्लान किया है. It's not official but I'm trying कि मैं लिखूँ. I've started, like I was today only searching the title for that book कि मैं क्या कर सकती हूँ. Something really sweet and nice, something that can warm people's heart and something that can, कि लोगों को cover देखकर, title देखकर ही हो कि यार I want to read this book. So yeah, I'm trying. I'm planning to write one, but it's gonna take time because I have to be very, जैसे poetry book तो मेरे पास already बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी, तो I was like okay जल्दी जल्दी हो गया. But right now I have to start from scratch. I have to think कि मैं कोई कुछ किसी का copy ना कर लूँ, या because I have to be like मेरे अपने कुछ rules and regulations हैं जो मैं किस तरह सोचती हूँ वो contradictory ना हो जाए कि भाई लोग बोलें भाई ये तो किसी को पर्सनल अटैक कर रही है. तो इस वजह से ना आई एम लाइक लिटरली वेरी केयरफुल इन राइटिंग दैट बुक बिकॉज इट्स अगेन लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी. तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. अच्छा, आखिरी 2-3 सवाल रह गए हैं, जिनमें से एक ये है कि how can still people order your book, because if anyone wants to like read it and have get a hand on it, so what is the procedure of ordering your book, where should they contact or what should they do? Okay. So the thing is, my first book is like kind of really stupid. A lot of people like it, but I find it very stupid and I find there are a lot of mistakes in it. So मेरी सारी books जो थी, जो print हुई थी, वो सारी sell हो गई हैं. तो जो तो अगर अब किसी को order करनी है तो Writer Talks की वेबसाइट है उनके पास, जिन्होंने मेरी बुक प्रिंट करवाई है उनकी वेबसाइट पे पड़ी हुई है. बट देन यू हैव टू प्री ऑर्डर इट, क्योंकि फिर वो प्रिंटिंग के लिए जाएगी. बिकॉज जितनी थी वो सारी सेल हो गई. आई हैड वन लास्ट कॉपी दैट गॉट सोल्ड लास्ट 2-3 महीने पहले ना. तो जो है, टू ऑर्डर इट यू कैन गो टू writertalks.net और उनकी वेबसाइट पे जो है आपको मिल जाएगी. एंड आई थिंक दैट्स इट, क्योंकि
वो भी प्री ऑर्डर करनी पड़ेगी बिकॉज इट्स नॉट इन द प्रिंटिंग प्रोसेस। और मैंने ज़्यादा दी भी नहीं बिकॉज आई वाज लाइक काइंड ऑफ रियली शाय एंड कि नहीं कुछ गलतियां हैं उनको ठीक करनी है, फिर नई बुक को देख लेंगे फिर क्या करना है। अच्छा, so last question, which is like very important question. How do you manage your studies and these your मतलब like writings and even talk to people? किस तरह से how are you managing everything? Okay, well that's a very Because interesting question. it is a really it is a question that I personally want to know because I really want to manage my time. I want to give everything an equal amount of time. लेकिन मेरे से कुछ भी नहीं होता. So I just want to ask कि how are you doing it so that I can have like an inspiration कि अच्छा नहीं ठीक है, I can do that too. How are you doing it? To be honest, that's a very good question because कल ही की बात है, कल I was like Saturday था तो I was like let's not do anything, let's take a break. मैंने पूरा दिन कुछ नहीं किया but at night when I was sleeping I was so anxious कि oh my god I had so much to do and I didn't do it. So this is what actually happens when you're so busy ना. Okay, so what I do is I take time, मैं अपना organize करती हूँ, या तो मैं लिख लेती हूँ या तो मैं अपने दिमाग में organize कर लेती हूँ कि आई हैव these things as priority. मुझे अपने ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेने हैं, मुझे टॉक टू हेल्प भी चलाना है, मुझे राइटिंग पेज भी चलाना है, मुझे जो मैं इंटर्नशिप भी कर रही हूँ अभी एक ऑफिस में सॉफ्टवेयर हाउस में, तो मैं वहाँ पर भी हूँ, वहाँ के भी प्रोजेक्ट्स हैं, फिर यूनिवर्सिटी के भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो इट्स ऑल गेट्स वेरी ओवरवेलमिंग एट टाइम्स. बट देन आई मैनेज इट कि ठीक है मुझे प्रायोरिटी आज की क्या है. से फॉर एग्जाम्पल कल मंडे है तो मुझे लेक्चर्स, मेरी कल ऑनलाइन क्लास है, कल अगर मुझे इंटर्नशिप पर जाना है और मुझे यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट देना है, तो व्हाट आई डू इज़ मैं फ्राइडे सैटरडे संडे को आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. एक होता था ना हम पहले फ्राइडे सैटरडे संडे रिलैक्स करते थे, माई वीक डेज माई वीकेंड्स आर ऑल सेम. तो जो है मैं शुरू से मतलब मैं उठती हूँ एंड आई हैव व्हेन आई वेक अप एंड आई रियली वांट टू टेल अदर्स एज वेल, बट यू व्हेन यू वेक अप विद अ माइंडसेट कि मेरा आज ये गोल है, आई हैव टू कंप्लीट इट नो मैटर व्हाट. ठीक है, एक माइंडसेट के साथ उठो. अगर आप उठोगे ही नहीं एक माइंडसेट के साथ तो आप आगे आप उठ के बोलोगे व्हाट शुड आई डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो उसी में टाइम निकल जाता है. सो यू विल नो कि आपने सुबह उठ के आई वांट टू डू दिस दिस दिस, आप उठे आप फ्रेश हो, ओके आई नीड टू डू इट, नमाज वमाज पढ़ के आई एम फ्री, अब मैं जो हूँ आराम से काम करने बैठ जाऊँ. यू वर्क एंड देन मेक श्योर आप अपने गोल आपका से फॉर एग्जाम्पल से यू वांट टू डू 3 थिंग्स एट टुडे, तो तुम एक काम कंप्लीट करोगे, टेक अ ब्रेक फॉर लाइक हाफ एन आवर समथिंग. हाँ कभी कभी हो जाता है कि 2 घंटे हो जाते हैं ब्रेक में, लेकिन देन मेक श्योर यू कंप्लीट ऑल दोज 3 थिंग्स एंड आफ्टर यू कंप्लीट दैट treat yourself. I treat myself every day. I pamper myself a lot because I know कि I need love, I need care, I need treat कि इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, तो I treat myself. So in the end, wake up with a goal कि I have to do something. Set your कहते हैं ना rules that this is how I will do it and this is how I need to do it और कितने टाइम में मुझे करना है. तो जितना ऑर्गेनाइज करोगे, जितना लोग बोलते हैं यार कौन लिखे कौन करे, तो सोच दिमाग में ही कर लो बट डू इट. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स अ लॉट. ठीक है, जैसे आज संडे है एंड आई नो दैट मेरा रूम बहुत फैला हुआ था पूरे वीक डेज में, तो आई क्लीन्ड माई रूम, आई prayed and then I started working. मैंने अपना एक काम कंप्लीट किया और पता है just because I sometimes get like I forget, मैंने अपने पास नोट्स भी बनाए कि मुझे ये करना है and then I started ticking it up कि ये हो गया ये हो गया ये हो गया. So I woke up with a mindset कि मुझे ये करना है और मुझे इतने इतने 15-15 मिनट के गैप से मुझे इतना इतना कुछ करना है. I did it और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम हो गए. अभी तो आपके इंटरव्यू के बाद I have to study तो मेरा वो होगा and then I think I'm free. Literally I'm free. Wow. तो in order to manage your time, एक साथ सब कुछ ना कर लो वरना इतना ओवरवेलमिंग हो जाएगा that you'll get breakdowns and you wouldn't want to do it. Divide your work in days, in times, in weeks के चलो मेरा ये प्रायोरिटी है, मुझे ये काम करना है तो मैं इसका आधा 1 घंटा इसको दे दूँ, आधा 1 घंटा इसको दे दूँ, और एंड दी एंड आफ्टर 10 or 11 o'clock सब छोड़ छाड़ के अपने आप को टाइम दो. वॉच नेटफ्लिक्स, ईट, डू समथिंग, पेंट, डू वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू लव. तो हाँ, और राइटिंग की जहाँ तक बात है वो मुझे बीच बीच में पढ़ाई के वक्त आ जाएगी या मैं प्रोजेक्ट कर रही होंगी मुझे उसके बीच में आ जाएगा तो मैं जल्दी से लिख लेती हूँ. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. राइटिंग के लिए कल आई टुक टाइम आउट ऑफ माई सेल्फ फॉर लाइक रीडिंग अ बुक. मैंने बुक पढ़ी, मैंने आराम से रिलैक्स किया, सब किया. तो इन ऑर्डर टू मैनेज योर टाइम यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड और प्रायोरिटी बनानी पड़ती है कि कब क्या करना है. गोल सेट करना पड़ता है. गोल्स जितना गोल सेट करोगे ना आपके दिल में खुद ही होगा कि आई हैव टू रीच दैट प्लेस, आई हैव टू डू दैट टुडे एंड देन आई ट्रीट माई सेल्फ. अगर मुझे होता है ना यार मेरा नेटफ्लिक्स देखने का दिल चाह रहा है, ये करने का दिल चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं. वंस आई कंप्लीट इट आई डू एवरीथिंग आई कैन और फिर मैं आराम से रात के 2-3 बजे
आराम से नेटफ्लिक्स देख के आराम से सोती हूँ फिर। Good. Okay, so at last, a little message for your Instagram community, for your followers. क्या कहना चाहेंगे आप उनको? What is there really that you want to say to them? मतलब कुछ भी. Okay, there's just one thing I want to tell everyone in this world, every human being who feels really hard to move, मतलब hard to live or something. It's just के never compete, never compare yourself with anybody, never compete with anybody. सबसे ज़्यादा बड़ा comparison आपको करना है ना, तो आप अपने आप से करें कि आप पहले क्या थे 6 महीने पहले, और आज आप क्या हैं। अगर आप 6 महीने भी पहले वही थे जो आज हैं, तो आपको अपने ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़े लो हैं उस चीज़ से, तो आपको फिर मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर आप ज़्यादा हैं तो अल्लाह का शुक्र करने की ज़रूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट आई हैव बिकम टुडे आफ्टर 6 मंथ्स और आफ्टर 2 मंथ्स। तो आपके अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कंपटीशन, सबसे बड़ी इंस्पायरेशन आप अपना आप ही होते हैं, और आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज यू डोंट नो कि सामने वाला अगर कुछ अचीव कर रहा है या किसी चीज़ से गुजर रहा है, तो वो किस स्ट्रगल्स के बाद वो सामने कुछ दिखा रहा है कि ओके आई गॉट दिस। ठीक है, अगर मेरी बात ये है कि मैं अगर टॉक टू हर में अगर यहाँ तक पहुँची हूँ, तो द स्ट्रगल्स बिहाइंड इट, द बैकलैश, द द बार बार डिग्रेड करना लोगों का, तो कि तुम तो साइकोलॉजी बैकग्राउंड की नहीं हो, तुम्हें क्यों समझ आई ये चीज़ें, मुझे बहुत कहा जाता है। तो वो सारे Exactly, I can understand that. वो स्ट्रगल्स सारे होते हैं, तो आप किसी को अपने आप को कंपेयर नहीं करो, आप अपने आप को कंपेयर करो, बी योर ओन इंस्पिरेशन, बी योर ओन हैप्पीनेस, बी योर ओन सेटिस्फैक्शन। और जब भी ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो मेक श्योर कि आप सेटिस्फाइड हो उस चीज़ से, आपका दिल माने, ये नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं या दोस्त क्या कह रहे हैं, नो नो, दैट डजेंट मैटर। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कि आपने चलो 80% कर ली, लेकिन अम्मा अब्बा कह रहे हैं 95 ले आओ, बट आर यू सेटिस्फाइड विद 80%? यस यू आर, अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स फाइन, इट्स ओके। एंड जिंदगी का कंपटीशन ना हम ही लोगों ने बनाया है, हमने ही बोला है कि ये स्टैंडर्ड है कि 25 तक यू शुड बी अ वेल सेटल्ड पर्सन, अपनी गाड़ी, अपने घर, अपनी शादी। नो, देर इज नो स्टैंडर्ड्स। इफ यू इवन इफ यू आर 30, गो है, देर इज लाइक, जब तक जिंदगी है एंजॉय करो, कोई मसले की बात थोड़ी है, कोई टाइम थोड़ी है, लोगों को कहना जो कहना है, तो अपने आप को बस अपनी सेटिस्फेक्शन बना लो, बस दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि जस्ट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट फॉर योर ओन सेल्फ। Thank you so much. I owe you this too. मैं उसको बहुत शुक्र telling me about Musfirah because you don't know what you have done. मतलब like it's so amazing that I talked to her and I asked her. I was just asking her कि यार I need like I don't know many writers. मतलब do knew few people, but I just wanted कि यार मुझे because I'm on Instagram and I just see people like having great books, but they're not very famous. And I just need people to see them to give them the appreciation they deserve. So I just texted her and I just asked her, and she told me like about the first person that she told me was about you. She said, "Ke Musfira ka karo." She has published a book, and I was like, "Acha, okay, I'll go and look." And then I just texted you, and you just replied, and I was like, "Okay, yeah, this is good." But little did I know okay, I would be this much happy when I will be interviewing you, and I am so happy. Trust me, Thank you. I'm so happy. Thank you so much for taking out your time It really and means a lot. talking to me. I loved it so much. And thank you so much for calling me here. It really means a lot. I feel so special. And thank you so much for making me feel that, that I should be interviewed and all. And thank you so much for appreciating me. I appreciate you too. Thank you. Oh, thank you. Okay, Allah Hafiz. Lafis.